प्राचीनता की छाँव में खड़ी ये इमारत अपने समय की गवाह रही है। इस पत्थर और ईंट से बनी संरचना न केवल शिल्प कौशल की मिसाल है, बल्कि बीते हुए युग की कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी ज़िला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद में स्थित एक प्रसिद्ध किला, जिसे जहांगीराबाद किले के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा तसद्दुक़ रसूल ने करवाया और इस किले का नाम मुग़ल सम्राट जहांगीर के नाम पर रखा गया। Nestled in the heart of Uttar Pradesh, the Jahangirabad Qila stands as a magnificent blend of past glory and future promise. Built nearly 200 years ago, its ancient memories that have been softened by time have lovingly restored their cracks and crevices, filled not with mortar alone, but with the dreams of a new generation. What was once a fortress of power now hums with the quiet pursuit of knowledge. It was like a first sight and I was in love with it. The Jahangirabad Qila showcases the architectural styles of the late Mughal period, blending Indo-Islamic influences with regional nuances. Its towering walls, majestic arches, and intricately carved windows reflect the grandeur of a bygone era. Originally built as a royal residence and defensive fort, its strong structure was designed to withstand invasions, making it an architectural marvel. ये इमारत न केवल एक घर, एक महल या एक मस्जिद थे, बल्कि उस समय के लोगों का जीवन, उनकी आस्थाएं एवं उनकी उम्मीदें इसमें बसी थीं। हर दीवार में कोई ना कोई कहानी छिपी है। कहानी उन मजदूरों की जिन्होंने इसे अपने हाथों से गढ़ा और राजा तसद्दुक़ रसूल जिन्होंने इसका सपना देखा। समय बीतता गया, युद्ध, आपदाएं और इंसानी हाथों की उपेक्षा ने इस इमारत को बदल दिया। The Qila's origins are intertwined with the history of Jahangirabad itself, a princely state during the 19th century. During the time of political turbulence, the fort served as a protective fortress for local rulers, witnessing numerous military strategies, alliances, and diplomatic exchanges. As one of the key structures in the region, it was a center for decision-making and housed royal families as well as visiting dignitaries. The fort has also seen shifts in power, with the influence of British colonial forces impacting the local governance structure. Despite these changes, the Qila remained an enduring symbol of local autonomy and pride. Like many historical monuments, the Jahangirabad Qila is steeped in local folklore and legends. One popular story recounts the bravery of a local ruler who, during a siege, successfully defended the fort, using his knowledge of the terrain and his alliance with neighboring kingdoms. Another tale speaks of secret tunnels beneath the fort, used to escape enemy invasions or to transfer goods discreetly during times of crisis. Beyond its military function, the Jahangirabad Qila was also a center of culture and learning. The royal court hosted poets, musicians, and artists contributing
to the rich tapestry of cultural development in the region. The fort's expansive courtyards once reverberated with classical music performances and literary discussions, making it a hub for cultural exchange. क्या लकड़ी के मतलब फर्श थे जिसके ऊपर मतलब डांस होता होगा या कव्वाली होती, कोई फंक्शन होता होगा, और उसकी जो छत थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ लो डाउन की गई थी और उसमें पेंटिंग की हुई थी, नीले और लाल हरे बूटे वगैरह थे, बहुत सुंदर सुंदर बूटे थे। तो उसको कभी राजा ने उस तरीके से इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसको डांसिंग फ्लोर कहते हैं। Today, this rich heritage is preserved through various efforts to conserve the site, allowing visitors to step back in time and experience the grandeur and cultural vibrancy that once defined the fort. इस इमारत को जहांगीराबाद एजुकेशनल ट्रस्ट ने अपने संरक्षण में लेकर इसमें पुनः जान डालने का कार्य किया एवं इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ किया और इसे एक शैक्षणिक संस्थान में परिवर्तित कर दिखाया। The realization of the dream, the way I'm thinking, what I have in mind, may not be fulfilled in my life. But starting, we want to start as soon as possible. आज ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक धरोहर का प्रतीक है। आज इमारत को देखकर लगता है जैसे बीता हुआ समय फिर जिंदा हो गया हो। इसकी हर दरार, हर टूटे हुए हिस्से में वो कहानियाँ छिपी हैं जो इसका वजूद मिटने नहीं देंगी। ये इमारत सिर्फ अतीत का आईना ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी सीख है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, इतिहास हमेशा अपनी जगह बनाए रखता है। हम इंडिया के हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं और कुछ हमारा काम का ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी गुजरी 40 साल से ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जो है मदर कंट्री को कुछ हमारी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। इस प्रोजेक्ट में 90% मेरे जैसे लोग NRIs हैं जो इसको कमिट किए हैं कि इसको सपोर्ट करें। Although no longer in use as a royal residence, the Jahangirabad Qila continues to hold significance for the local community and tourists. It serves as a popular destination for those interested in history, architecture, and cultural tourism. Efforts to preserve the fort have been ongoing, ensuring that future generations can appreciate its historical and architectural value. In recent years, heritage walks and cultural festivals have been organized within the fort's premises, reviving its role as a center of learning and cultural exchange. Each classroom is a symbol of eager minds that shelter scholars and dreamers of tomorrow. Corridor laughters and conversations weave new stories in the air. The high ceilings still echoes with the whispers of history, now resonate with the sound of learning, each note a promise to progress. These initiatives aim to reconnect people with their past while ensuring that the stories and significance of the Jahangirabad Qila are not lost to time. The Jahangirabad Qila is more than just an old fort. It is a piece of living history. For 200 years, it has stood as a witness to the trials, triumphs, and transformations of the region. Today, it continues to captivate visitors with its grand architecture, rich history, and cultural legacy.
The fort remains a valuable treasure, symbolizing the resilience of heritage in the face of time. GIT is a unique educational institution which is trying its best to provide best quality education at the affordable price, because education has become a business, and we feel that education should not be a business. It should be a service to build the future of our generation with the best possible knowledge. ये थी कहानी उस इमारत की जो आज भी हमारे साथ खड़ी है, हमें अपने अतीत से जोड़ती हुई।